Good morning, class 7. Before this, we studied about the depletion of water table. In that, we saw some reasons increase in population, industries, and agriculture, and many more. They affect the water table. So, we'll discuss about increasing population. Increasing population creates demand for construction of houses, shops, office, roads and pavements. This decreases the open area like park and playground. This in turn decreases the seepage of rainwater into ground would be the consequence. Recall that puka floor does not allow water to seep in easily, while in grass lawns, water seep through in no time. So, increasing population. So, all of you know, due to the increasing population, there is the demand of many houses, shops, office, roads, and pavements mean the areas, open areas. Then this decrease the open areas like park also, then playground also is decreased, and in turn what happened, the seepage we studied yesterday. Seepage of water means observing of water inside the ground or into the ground, that is known as seepage. What would be the consequence? Recall the puka. Okay, then what happens? The puka floor does not allow, means the floor which is present, they do not allow to seep in easily the water. Also the grass lawns we have seen in the garden, the lawns are present and they do not seep properly water in time to time. So moreover, a huge amount of water is required to construction work. More water is required. Often groundwater is used for this purpose. So yesterday we discussed that before starting construction, the bore wells are dig, and through that bore well the water is used for construction, and that water comes from the water table. So for construction more water is required. So on the one hand we are consuming more groundwater, and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground. So क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जो सिपिंग होना चाहिए मतलब पानी ज़मीन के अंदर जाना चाहिए वो कम से कम हो रहा है. दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. सो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर टेबल है वो डिप्लीशन मतलब उसका जो पानी है वो कम 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 होते जा रहा है. वाई? बिकॉज दैट वाटर इज़ यूज फॉर मेनी पर्पजेस लाइक एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड मेनी मोर things. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low level. मतलब कुछ एरिया के जो वाटर टेबल है वो क्या हो रहा है कि मैनी सिटीज़ के गॉन डाउन मतलब नीचे चले गए, उनका लेवल जो है वो कम होते जा रहा है. इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, दिस इज ऑल्सो वन डिप्लेशन. ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज द वाटर टेबल level decreases. Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by the most of our industries is drawn from the ground. This also we discussed yesterday that whatever water is used by the industries, they also use from the groundwater. Then by this also the level of the water table decreases by industries. Again here one activity is shown. Then see, same, name some industries familiar to you. Make a list of the products obtained from this and use in our daily life. Discuss with your teacher and parents how to growing industries activity is responsible for the depletion of water table. So before only we discuss that many industries are there. Day by day industries are growing, and by increasing of industries the water level which is present under the ground decreases. Then next, by agriculture also the water is used by agriculture and the table decreases. A majority of farmers in India depend upon rains for irrigating their crops. Irrigation systems such as canals are there
only in a few places. Even this system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. Erratic rainfall मतलब पानी कब रेनफॉल कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेवल में पानी नहीं आता है. Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agriculture forces increasing use of groundwater day by day. This results in depletion of water table. So एग्रीकल्चर से भी क्या होता है कि एग्रीकल्चर से भी डिमांड है. जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर भी बढ़ना चाहिए, तभी हमको सबको सफिशिएंट खाना मिलेगा. So for this what they are doing, farmers, they are using groundwater because the rain is erratic. मीन कम से कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, लॉस करती है, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में हो जाती है. सो इसलिए फार्मर क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर जो होता है उसको यूज़ करते हैं, बोरिंग या ट्यूबवेल ऐसे वेल इस तरीके से डिग करके उसका पानी यूज़ करते हैं. Next is distribution of water. So distribution. What is we'll see about the distribution. The distribution of water over the globe. Globe मतलब earth is quite uneven due to the number of factors. So जो पानी का distribution है वो uneven है, मतलब ज़्यादा कम इस तरीके से पानी distribution होता है. Globe बोला है मतलब earth. Some places have good amount of rain. कुछ जगह पे ज़्यादा अच्छे से बारिश होती है. एंड आर वाटर रिच, वहाँ पे पानी ही पानी होता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल. और कुछ प्लेसेस में डेजर्ट्स है, ये भी आपको मालूम है. वहाँ पे स्कैंटी मतलब कम से कम रेनफॉल होता है, तो वहाँ का पानी कम ही रहेगा. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. इंडिया ये सबसे बड़ी कंट्री है और इसमें जो रेनफॉल है वो हर जगह सेम नहीं होता है. सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल. सो कुछ रीजन्स में एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा रेन होता है और कुछ जगह क्या होता है कि लिटिल मतलब कम से कम पानी होता है, रेनफॉल होता है. एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स. ज़्यादा बारिश जहाँ होगा वहाँ पे फ्लड्स आएंगे. Whereas the absence of rain results in drought. Wherever there is a less amount of rainfall at that region, there may cause droughts. Droughts you know, सूखा पड़ना. Therefore, some regions in our country may have floods while other may suffer from droughts at the same time. So, due to lack of rain and due to heavy rain, where there is heavy rain, floods will occur, and where there is scanty rain, there the area will become drought. Then given here is the rainfall map of India. It gives the average annual rainfall in different region of our country. So one map is given and in that map we can study about the average annual rainfall. Annual means yearly. Locate on the map the place you live in. Are you blessed with sufficient rainfall? See the map where you are located or you are getting a sufficient rainfall. Is there sufficient water available in your area throughout the year? It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall yet there is shortage of water. Can we attribute this to mismanagement of the water resource? अभी जब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमको सफिशिएंट वाटर तो मिल रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि वी आर नॉट गेटिंग अ सफिशिएंट वाटर. वी ऑल्सो हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स फॉर गेटिंग वाटर. सो what इज़ द रीज़न? दिस इज़ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. क्या कारण क्या है कि मिसमैनेज कर रहे हैं जो वाटर रिसोर्स, मतलब जो हमको पानी पहुंचाते हैं वो उनका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए हमको सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि पानी तो बहुत सारा है. सो ऑल दिस थिंग्स हैपन्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. सो विल स्टॉप. नेक्स्ट विल सी इन नेक्स्ट पार्ट.